One of the things that I put to my company was I will work from Pakistan. जब अपनी बारी आई तो ये भी देखना होता है कि घी पे 10 रुपए कैसे बचाएं। तो वो वर्ड इन्फ्लुएंसर गुज़श्ता 5 से 10 साल की एक इजाद है। एक बैटल रही है यंग जनरेशन में कि यार पैशन को फॉलो किया जाए या कोई स्किल एक्वायर किया जाए। All these ingredients and all these new patches, I put it like this, as part of this suffer. Is it true कि आप उनकी डिबेटिंग से इम्प्रेस हुई थी? बहस करते करते ही शादी हो गई। We were friends before we became husband and wife. Work-life balance. So do you have to find that balance yourself? The interesting thing that happened was that we joined the same company. They're a little disconnected from the realities of what goes on in Pakistan on ground level. Is that true? Did you find that to be true since you worked abroad as well? हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो बाहर जाते हैं और अगर वो एक फैमिली का मेंबर बाहर गया है और वो बाकी 10 लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है तो अच्छी बात है ना। आपको ये लगता है कि बाहर हमें जाके एक अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन वेरी फ्यू ऑफ द पीपल वुड से हाँ हम बाहर जाके बिजनेस अच्छा कर सकते। इंडिया ने ब्रेन ड्रेन करके दुनिया की टॉप कंपनीज के अंदर अपने सीईओज बिठा दिए हैं। बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसे लगता है कि बस माँ बाप टाटा। और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर कोई रिजल्ट आकर डिसीजन करने का मादा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज समथिंग हमारी जो न्यूअर जनरेशन है इसको सीखना पड़ेगा। साकिब, हाजरा, वेलकम टू द अपर डेक। आज मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है बिकॉज आप यूजुअली आई एम टॉकिंग टू अ सिंगल गेस्ट। आज मेरे साथ आप दोनों हैं एंड आई एम रियली होपिंग कि आप लोग इंसाइट देंगे इनटू योर ओन इंडिविजुअल करियर्स एंड योर लाइफ टुगेदर एंड व्हाट मेक्स यू वर्क। So let's just take it from the top. Saqib, please share your journey with us and किस point पे हाजरा आपकी journey में आपके साथ शामिल हूँ? I belong from Lahore, pure Lahori boy, put it like this. I did my school from Regional Public School, Lahore, Government College, Lahore, and then I entered into UET, Lahore. Up till college, बहुत पढ़ाई की. I think UET आकर थोड़ा सा पढ़ाई को कम करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लाने शुरू किया एंड डिबेट्स वाज माय पैशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आई वाज फ्रॉम माय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई वाज वेरी इनटू द डिबेट्स एंड द ड्रामेटिक्स ओवरऑल. And that's where Hajra entered in my life, because in one of the debating society meeting, here was this young girl coming out, junior to me, sitting over there and listening to my debates and getting a little bit impressed, I thought, at that very point of time. So the journey continued and she entered over in that my life over from there. And once I finished the university, then it was more about the professional career. I started with Siemens. I worked in Siemens in Germany and Spain over the period of 4 years. And then I did another journey, almost 10 years remained with Siemens. Another 5 years Nokia. And then another 4 years with a Finnish company, Comtel. Another 1 year with Oracle. And now for the last 7.5 years, I'm working for the German company SAP. And SAP happens to be one of the largest software enterprises in the world. I think over like SAP half के a बारे million. में मैं ये अक्सर कहा करता हूँ, SAP एक तर्ज़े ज़िंदगी है. Right. ये सॉफ्टवेयर से आगे जा चुका हुआ है. Absolutely. Because the kind of solutions that they provide and it's across all industries. पाकिस्तान के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान के अंदर, ग्लोबली दुनिया के अंदर, एंड पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एम्ब्रेस कर लिया हुआ है. सो दैट इज़ समथिंग अ टोटली डिफरेंट वे दैट वी अप्रोच द सॉफ्टवेयर एंड द इंडस्ट्री एंड ओवरऑल हाउ द पीपल हैव टू वर्क in their professional and careers and how the organizations need to work. I think ये उसका एक बड़ा interesting phenomena है. I call it always. So I don't call SAP as a software company. I say यार ये तो एक काम करने का एक तर्ज़ अमल है अपना. Right. And ये तर्ज़ अमल I think is available in more than 180 countries and you have like over like 500,000 customers all over the world. It's 200 countries plus 500,000 of customers, and then as we are moving and the technology is moving from the on-prem to the cloud to the AIs of the world. So now this software is having all these ingredients and all these new patches, I put it like this, as part of this suffer as we are moving on in this technological journey. Fantastic. So we learned more about Saqib's enterprises, but Hajra, so is it true कि आप उनकी debating से impress हुई थी? जी, हमारी बस कुछ बहस करते करते ही शादी हो गई। So yeah, it is true that we were there, और इसमें सबसे ज़्यादा important ये है कि we were friends before we became husband and wife. Right. तो हमारी अभी तक दोस्ती ही चल रही है। तो दोस्ती में आपको पता है कि how this goes, and
further moving on, the interesting thing that happened was that we joined the same company. After I was done with the university, I joined him in Siemens. Right. And we remained together for 14 years in the same organization. And people were like, "Oh, तुम लोग तंग नहीं आ जाते एक दूसरे से? How is it possible?" Thankfully, he moved into sales and I moved into project delivery in the telecom sector. तो उस वजह से थोड़ा सा हमारा dimension फ़र्क हो गई. Otherwise, literally we were together all the time. इसी दौरान हम लोगों ने executive MBA भी किया. Right. We were working from 9 to 5 and then from 5 to 9 we were at executive MBA in the evening in Lahore. एंड जब हमारा वो भी था उसका भी इंटरव्यू तो उसमें उन्होंने यही कहा था आप 24 घंटे इकट्ठे हैं, डोंट यू फील यू हैव हैड too much of each other? We were like, no, we can never have, inshallah, too आपने कभी much किसी of को ये each नहीं कहा कि none of your business? yeah, ना वो खैर वो बनता जा रहा था. एंड we had our first baby during that time as well, जब हम MBA भी कर रहे थे और हम जॉब भी कर रहे थे और एक माशाल्लाह प्रोडक्ट भी आ गया. तो yeah, it was an interesting journey. So, जब इतना कुछ आपका ओवरलैप कर रहा हो तो चीज़ों को अपनी इंडिविजुअल आपकी जो करियर ट्रेजेक्टरीज हैं उनको और अपनी पर्सनल लाइफ को आप लोग कैसे साथ साथ लेकर कैसे चल रहे हैं? व्हाट इज द की इंग्रेडिएंट देयर? अच्छा, मैं पहले इसका जवाब देती हूँ फिर साकिब का पर्सपेक्टिव सुने. मुझे तो लगता है इट वाज अ लर्निंग जर्नी फॉर बोथ ऑफ अस बिकॉज दिस वाज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको ब्लड रिलेशंस या हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठा रखा ही नहीं जाता. And while I came here, I was reporting to him. I mean, I worked in Siemens Spain with him for some time. When we got back to Pakistan, I had no intention of joining any of the jobs. Right. But Siemens Pakistan insisted that you have worked in Siemens Spain, so yeah, you just come and report to him. So it was very unusual at that time. अच्छा, we never thought कि इसके क्या pros हैं क्या cons हैं. There were pros but there were cons as well. यानी उसमें सबसे ज़्यादा I remember one of our bosses telling us, तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? I said, why? Because people say that you're progressing because Saqib pushes you. I was like, excuse me, we are like, different people and we are in different fields. Why do you say that? So yeah, this is a kind of a mindset which is there or which hindered us. लेकिन वही वाली बात, it took time for us to prove ourselves कि हमें एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है एज लॉन्ग एज वी आर प्रोफेशनल इन द प्रोफेशनल डोमेन. हाँ, ये भी है कि थोड़ा मसला ये था कि घर जाके भी प्रोफेशन हमारा ख़त्म नहीं होता था. वी कैन नॉट स्विच ऑफ और कंपनी मोड. तो वो हमारे साथ 14 साल रहा. 14 years वी वर्क टुगेदर एंड उसका भी कुछ नुकसानात थे कि वी वर वेरी मच कंटेन्ड इन अ सर्टन सर्कल जहाँ पे हम रहते थे प्रोफेशनली. आप लोग दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में लीडर्स रहे हैं, अभी भी हैं और आप लीडरशिप रोल्स में हमेशा से रहे हैं. तो घर में बॉस कौन है आप दोनों में से? आई थिंक पहले मैं ज़रा ये पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर करूँगा. आई थिंक जब दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो, सो दे नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ईच अदर. एंड आई थिंक एज अ प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल कपल वी ट्राइड टू कम्प्लीमेंट ईच अदर, trying utilizing the strengths of each other in their respective fields, and wherever the weak areas were, the other person tried to cover and help that on each other as well. Right. I think that momentum and that strength makes us very strong as a couple as well. क्योंकि बहुत सी चीज़ों के अंदर आप एक दूसरे से सीखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी कमी को या अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार वो इस वीकनेस को उनके साथ हेल्प करने में कवर करे. सो आई थिंक वी यूटिलाइज ईच अदर स्ट्रेंथ इन अ वेरी वेरी पॉलिश्ड एंड स्मार्ट वे. And we also helped make our weaknesses, because अपनी weaknesses ख़त्म नहीं हो सकती आपकी लाइफ के अंदर. Right. I think you just see each other that how you can help to make that situation better. I think weakness को accept करना is more important. और जब accept आप कर लें और आप दूसरे की weakness को complement करें with your strengths, तो I think that should be one of the key ingredients that make any relationship work. और अब आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ. Leads to the other question, that the word boss, I think it is on the situation matter. Right. So when it comes to the negotiations, right, I am the boss. Okay. Over there. When it comes to handling to the people and talking about how we are working as a couple and how we can connect to the other people, she is the boss over there because she has a much better trait in that very front than me, if you ask me. Right. If it further comes to the point how to handle the kids, it's depending on the situation. डांटना है तो I am the front end over there. प्यार करना है तो she is the front end over there. I think we are able to define the word boss in the situations in a very
defined way where we are giving this title of boss to each other depending on the situation that we are in. And I think that makes us a more stronger as a couple, because again it reaches back to the point working on the strength and weakness and then understanding the strength of weaknesses of each other as well. So I think that makes us a little different in terms of others, that I feel. Fantastic. हाजरा, आपका कॉर्पोरेट करियर से आपने ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत चैलेंजेस होते हैं पाकिस्तान में किसी के लिए भी एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं यहाँ पे. उसमें सोसाइटल बैरियर्स भी हैं, कुछ फाइनेंशियल बैरियर्स भी हैं, नेटवर्किंग रिलेटेड भी हैं, प्लस कुछ आपके इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक जो है वो रिस्की भी समझती है ख़वातीन लेड बिजनेसेस को. इज दैट ट्रू? इज दैट समथिंग दैट यू फेल्ट वाज a barrier when you tried to enter this? Actually, वैसे barrier एक other than being a woman, being a corporate person for like the big chunk of your life and then turning into entrepreneurship, ये itself is a big challenge. Yes. Because वही बात है ना कि we were pampered like anything in the big corporates. Absolutely. And जब अपनी बारी आई तो ये भी देखना होता है कि घी पे 10 रुपए कैसे बचाने हैं. So overall the mindset change was very challenging. And secondly वही वाली बात कि it did happen at a very later stage in life. मुझे entrepreneurship में आए हुए अभी 7 साल हुए हैं. उससे पहले मेरी 18 साल की जर्नी कॉर्पोरेट के साथ है, and that too at global level. तो from women perspective मुझे एक चीज़ बड़ा खुशी है इस फील्ड में आने की कि when I was in the corporate, I felt like, yeah, this is the world. I mean, we are doing the most important thing in the world, and the world revolves around this corporate job that we're doing. But when I came out and I interacted with women जो अपने limited resources के साथ, अपने limited exposure के साथ, they had the passion to do something, I was amazed. There are so many women doing such wonderful work, and I must say they're the unsung heroes. एक तो होता है ना कि जी अच्छा घर संभालना है, सब कुछ करना है, उसके साथ साथ they are trying to make something to have an identity for themselves. और जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है, the field I went into that was hospitality. I opened up a cafe. तो उसमें भी मुझे बहुत challenges हुए because this is a male dominated society. All my staff is male, all my peers are male, और generally वो सोचा जाता है कि यार इतने ज़्यादा इन्होंने public dealing करनी है तो it has to be very different. Right. But at that point मुझे लगता है कि जितना मुझे corporate ने help किया ना, corporate की training, corporate की learning ने, nothing else. Right. So much so कि जो मेरे peers थे, they were like why don't you be part of, they considered me as one of the leaders just because I had the exposure of that sort. Right. तो challenges थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि because I took my sweet time to totally be enabled and be there and then enter my passion, तो मुझे I felt pretty comfortable. और finances का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि I was at a stage that I had a cushion to fall back on to जब आजकल के ज़माने में जबकि enterprises को बहुत difficulty हो रही है financially, तो I was not very big on spending too much and I was taking my sweet time, going step by step and making my way through. So what makes your cafe unique? What is the one USP of the Red Door? अच्छा, the Red Door basically if you visit the premises, मैं तो उसको हमेशा एक women empowerment cafe कहती हूँ. आप कभी जाएं ना, मैं ये भी बात कहती हूँ कि there are cigar lounges, for men, जहाँ पे cards भी चल रहे होते हैं, cigar भी चल रहा होता है, there aren't any places like this for women. The Red Door की एक बात ये है कि it's very family oriented and it's very women oriented. Right. And in terms of what, like the staff, your ambience, your menus, your what happens there, which is staff and women ambience and empowerment खाना related. पीना is the same. वो तो हर Right, जगह वही होता है. right. It's the whole vibe of the place. ठीक है. I remember that I had people coming to me and saying कि हमने यहाँ पे girls party ढोलकी करनी है. I was like, okay, fine, do it. Cafe में ढोलकी हो रही है. And while on the other hand, I had this a scholar coming to me. She was wearing a hijab and everything, and she said that we want to have a dars here, and because we feel comfortable that it's owned by a woman, तो आप हमें अलहदा करके जो हमारी ख़वातीन पर्दा करती हैं वो आपके यहाँ बड़ा ठीक उसका रिस्पेक्ट रहेगा. तो
I felt that I had a very clear communication with the women, and the kind of challenges they were facing, whether it be serious talks, something, a tribe kind of a thing, a women tribe, with the feel where you feel, ki, yeah, we are safe here, we can talk about anything. There are many organizations which are collaborating with me, like there's Girls for Girls, there's Wow Women PK, there's Connected Women. All of these organizations come to me and have sessions there. So I won't say that it's a woman only cafe, but it is something that kind of gives a feeling of empowerment to women and to speak their hearts out somewhere. So that's my USP, I guess. That's wonderful, ji. So Saqib, were you supportive of this whole idea from the very beginning? Did you think that इनको इसी तरफ जाना चाहिए या? Okay, as a couple, what you try to complete the dreams of each other. Yep. Okay, so if I know Hajra from the very start, this was one of her dreams. She wanted to be connected with people. She wanted to do something for the woman. She wanted to have a place where she can define things for other, where she can give a statement out where they be part of the sentiments of the people as well. So this is something that we discussed at the start of our marriage. So when down the road we were doing our corporate, so it was 17 years down the road, where we discussed, do we want to be part of this corporate moving over for the next 13 to 15 years? Right. Or one of us should start doing our dreams over here, which we thought about at the very start. One of us? One of us. Why one of us? And I tell you on that one, because my dream is moving forward is somewhere to do a lot of sports. I really want to be a sportsman, and I don't want to limit myself these sports with the age factor over there. So connecting back on the dreams part, I think this is one thing that she wanted to do, and I tried to play my part over there just to make sure that she is there. Because as she said, it was an entrepreneurship level, it was female-led entrepreneurship, even overall Red Door that we were talking about. So wherever I can, I was there just to support her, but it's a totally her venture, and I feel proud about it, the way she is able to deliver it over the period of time, and now she is standing. Being in the corporate for 25 years and being called a corporate leader is something that anybody who's there in the 25 years will achieve something. Changing her career in the middle of this one and then proving herself to be an entrepreneur is something which is much bigger than being in the same field as well. So that's a lot of credit that I give to her. Absolutely, but I think आप corporate career को भी थोड़ा सा downplay कर रहे हैं. आपने you've done really well, and not everybody makes it in 25 years to where you are today, and I'm sure you have a lot to be proud of. And humility अच्छी बात है, but I would love to know more about your own dream, your sporting dream. What is that? And so I have been a debater as I said at the very start, and that was my passion. Down from the road, if I see my last 10 years, I think this is something that I'm doing. I have been part of the corporate world, and I'm doing delivering it for the corporate world, the results that they want to do. But I think one of the passions that I had from the very start was, what is the legacy that anybody at I will leave behind? So I think this my current job is giving me that angle of completing that legacy, that how I can make the life of the people better. You're also involved with a couple other organizations. I've been working also as the TAI president, which is entrepreneurship venture, TAI Islamabad ka yahan pe. I'm doing that one as well. I was also part of the OICCI management committee as well. I'm also a member of the Pakistan Business Council as well. So I'm trying to cover so many things all in parallel. But I think at the end of the day, what is the purpose of all these things? It's about how you can give back to the system and the society. One of the reasons of staying, so I'm managing multiple Gulf countries as well, but despite that one of the things that I put to my company was I will work from Pakistan, and I will try to bring the Pakistan team to take that lead over there. I think that's a passion that I have in me. I want to make sure that this country has given a lot to us. The engineering university that I studied, frankly speaking, the whole education was sponsored by the state. Not much of us was given by us. When the state is giving too much in you, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि we go back and we owe back to this country in much way as well. And especially जब हमें एक ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें हम किसी leading position में आकर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं. कुछ change लेकर आ सकें. I say any person who's in a managing director position, this is our two roles that he has to do. One of the role is to get the business for this company that he or she is hired for. But there's another angle. We need the best out of this company for this country as well.
all these multinational companies, they offer a lot of things. They have free educations, free softwares. They provide the guidance over there, how to have your academia and the relationship with the industry. They provide you experts who can guide you on the syllabus that you have to be on there. And all these global companies do that. As a leading position, I think it's our role just to make sure we get the best out for our country for this one as well. I think that's the passion, if you ask me, how to make the life of the people better, how to connect to the people over there. With the Thai president that I'm the current job, I think it's more about how I can connect to the young people who are entering into the entrepreneurship ventures and how we can help them to guide them out over there. It's not about only the seed money that we are talking about. It's about how to make use of the best resources and the overall infrastructure that we have all around as well. And the last thing is my passion about the sports. I think, thank God, I put all my kids into that sporting arena. They can sit next to me and see the Formula One and see the latest Premier League match as well, see the last cricket match that we won or lose there as well. And not only these ones, all kind of sports. That's something. And I think these sports documentaries and that give me a lot of passion over there. Right. The stories of the people, that how they are able to achieve the glory that has reached at one point of time they thought they will not be. I think these are the passion that drives us over there. And I think we need to give back to this country. There's a lot that the people are moving out from here. A lot of talent is moving out from here. It's a country of around 280 million plus. And yes, one of the challenges that we have a lot of people, but we don't have skilled people over here. Right. And that is one of the things that we need to, as corporates and as an individual, we needs to make sure यार हम वो skillful people यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों में skill लाए यहाँ कर. हमें एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढने में मुश्किल पड़ती है, जबकि हम नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो बहुत से लोग हैं हमारे पास. आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मेक श्योर दैट हाउ वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग दिस स्किल एंड दैट एक्सपीरियंस. एंड मैं एक और चीज़ कहूँगा कि द वे दिस टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, it is becoming more and more difficult now to follow the pace of this technology. और ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है. And it's very important for our youth to make the best use out of this technology as well. Gone were the days when we were used to memorize the thing. Now there is a lot of data available with us. The only way we can survive and only way we can be successful is about how we can best use this data for the problems on ground we have for the people, and we can help them grow in a better shape. Absolutely. We have AI, we have cloud, we have so many other things to assist us in our daily lives now. And it can also be overwhelming for a lot of people. But yes, the younger generation, they need to be in tune with what's available to them, and they need to understand कि वो इन resources को अपनी daily lives से लेकर अपने future aspirations तक सबसे अच्छे तरीके से कैसे utilize कर सकते हैं. You're talking about skills, and I completely agree with you there. हमेशा से एक बैटल रही है यंग जनरेशन में कि यार पैशन को फॉलो किया जाए या कोई स्किल एक्वायर किया जाए. आपका क्या ख्याल है हाजरा? पैशन ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में या स्किल ज़्यादा ज़रूरी होता है? Well, you need skill to acquire your passion. Of course, मेरा भी यही ख्याल है. मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मुझे स्किल मिली ना वो MBA से मिली. राइट. बिकॉज एट दैट टाइम जब हम बड़े हो रहे थे, या डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था. देयर वाज नो अदर वे. आई एम सो थैंकफुल फॉर द सिस्टम राइट नाउ दैट द किड्स आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज देयर पैशन एंड व्हाट इज समथिंग दे वांट टू डू. तो सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट योर किड्स, बच्चों पे आप लोगों के जो इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो होता ही है, बट बीइंग यू नो करियर ओरिएंटेड एंड करियर माइंडेड पीपल, बच्चों के साथ आप लोग भी किस तरह से डीलिंग करते हैं? टाइम कैसे निकालते हैं उनके लिए? हाउ डू यू कनेक्ट विद देम ऑन डेली बेसिस व्हेन यू हैव सच बिजी लाइव्स? आपके करियर इतने डिमांडिंग है, तो tell me something about that. I think one of the things that helped us in this was that we were in a joint family there as well. Right. And my parents were present to guide the kids as well. I think my mother is a PhD in biochemistry. My father is doing the MSc in chemistry as well. Apart from that one, I think बहुत सी तरबियत जो है वो घर में ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से आती है. सो वी वर ब्लेस्ड इनफ टू हैव दैट तरबियत फॉर आवर किड्स ओवर देयर. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट वी वर एबल टू डू आवर प्रोफेशनल करियर्स वर द सपोर्ट दैट वी वर गेटिंग ऑन द बैक एंड फ्रॉम द फैमिली. देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैवल दैट वाज इन्वॉल्व्ड. देयर वाज अ लॉट ऑफ as she mentioned that we were going to the office, then doing our MBAs, then coming back to the kids as well. So I think उस सपोर्ट ने बहुत अहम रोल अदा किया हमारे प्रोफेशनल करियर्स को आगे जाने के लिए. As far as the kids are concerned, I think today's parenting is a totally different art
put it like this. The way we were grown up and the way our parents did our parenting, it's totally different with the way that we have to do our parenting of our kids as well. मैं हमेशा कहता हूँ कि पुराने दौर में ना 3 सोर्सेज होते थे इंफॉर्मेशन के. एक आपका मोहल्ला होता था, एक आपकी फैमिली होती थी और एक आपके स्कूल के फ्रेंड्स होते थे. मोहल्ले पे 100% कंट्रोल होता था पेरेंट्स का, फैमिली पे 80% कंट्रोल होता था और स्कूल पे 50% कंट्रोल होता था. सो द इंफॉर्मेशन दैट कम टू अस वाज क्वाइट फिल्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट्स, व्हिच इज नॉट द केस ऑफ द किड्स ऑफ टुडे. They have the information from all the different sources. The only way we can tell them is only guide them to be selective around the things and what is right and wrong and make their right decisions as well. And the kids are very smart today. They are. I will say, we are lucky enough to have these kids which are got up in this era and trying to grow up their lives in this era as well, because they have a lot of options on the table. Yes, the right and wrong option. दुनिया के अंदर right है और wrong है, मगर उसकी definitions और उसकी पैरामीटर्स वक्त के साथ साथ कुछ रिलीजियस लेवल पे आ रहे होते हैं आपके पास, कुछ ना कुछ सोशल लेवल से आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आपके खिद्दे से निकल रहे होते हैं, कुछ रवायात से निकल रहे होते हैं. सो आई थिंक आवर किड्स वर एबल टू अडॉप्ट टू दिस थिंग्स एंड वी वर एबल टू. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड फॉर देम वाज ट्रैवल विद देम अ लॉट. Right. So every year we used to travel within country or outside country, and that helped us in gaining a lot of information how the world works. It's travel itself gives a lot of experience. Right. So I think that travel gives that exposure to the kids to make their decisions about the society and the cultures as well. So our son left for studies at the age of 16. He was in the university. Right. He will be graduating now. So it's sending a kid outside at the age of 16 and the daughter at the age of 17 makes a lot of difficult decisions to make, especially when you're sending them to in a different culture. But I think by the grace of God, we were so confident on the kids that they will be able to adopt and they do the best what is offered to them, and also will go along with the cultures and the different cultures that we are talking about. And mashallah, they are doing great on that. Very हाँ, there are studies on this subject matter in particular कि career oriented parents के जो बच्चे होते हैं वो comparatively ज़्यादा resilient होते हैं और ज़्यादा independent होते हैं. और मगर उसके साथ ही ऑफ कोर्स करियर ओरिएंटेड होने के साथ कई बार पेरेंट्स को कुछ गिल्ट भी होता है कि बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना वो चाह रहे होते हैं. तो आप लोग कभी इस सिचुएशन में फंसते हैं कि दिल कर रहा होता है कि और भी टाइम स्पेंड करें बट इट्स सो बिजी दैट यू कांट मेक टाइम? अच्छा, मैं और दैट यू कुडंट मेक टाइम. बच्चे अब तो आई थिंक आपके अब तो खैर वो यानी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है टाइम की, लेकिन नहीं, ऑन दी अदर हैंड मुझे ये लगता है कि वो मेरा जब बेटा पैदा हुआ था ना, तो मैंने उसका बर्थ अनाउंसमेंट में उसका CV बनाया था. राइट. तो और वो मैंने ना उसमें एट दैट टाइम वी वर वर्किंग फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइलिंग के सिस्टम्स में, तो हमारे जो मोबाइलिंग के कलीग्स थे ना उन्हें भेज दिया था. उनमें से मुझे आदों की आई कि हमने इसको नौकरी पे रख लिया है. दे वर लाइक ओके दिस इज योर किड, सो यू नो वी विल हैव हायर हिम. हमने अपने बच्चों को कभी अपने प्रोफेशन से दूर नहीं रखा. यानी वट हमारे यहाँ जैसे ये कहते हैं ना एक तर्ज अमल, हमारे यहाँ लाइफस्टाइल ही प्रोफेशन था. एंड लकीली बोथ ऑफ अस वर वर्किंग टुगेदर. तो बच्चे लिटरली वो हमारी बातें सुन सुन के, अच्छा जी ये हो रहा है, ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये मसले हैं, ये उनको कभी ये बात स्ट्रेंज ही नहीं लगी कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. सो एक तो खैर ये लकीली वी वर इन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमने ये सब कुछ किया. सेकेंडली ये इन्होंने जो बताया कि हम जॉइंट फैमिली में थे, तो मुझे तो ये लगता है कि हम अपने बच्चों के ना बहन भाई थे, बिकॉज यू नो हमारे यहाँ दोस्तों की तरह रह रहे हैं. दोस्तों की तरह, बिकॉज यू नो दादा दादो वॉज द प्राइम पेरेंट्स एंड वी वर लाइक अच्छा इफ वी हैव टू क्रीप आउट टू वॉच अ मूवी, यू नो वी हैव टू प्लान इट विद देम. सो दैट वाज लाइक वन सिचुएशन. और जो कि मुझे लगता है कि हमारे आजकल के पेरेंट्स में वैसे भी है, लेकिन अपने बच्चों के दोस्त बन के रहे हैं. बहुत देर से ये बात सुनते थे, लेकिन दोस्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक यू नो एक ऊपर ऊपर के दोस्त. लिटरली यू नो डीप डाउन फ्रेंडशिप, अपने मसले उनसे हल करें, उनसे शेयर करें. यार मुझे आज ये मसला है, वो मुझे लगता है फ़लाँ बंदा है, वो मेरा बॉस मुझे ये कह रहा है, या मुझे उस टीम के लिए करना है. ट्राई टॉकिंग टू देम एंड यू विल बी सरप्राइज हाउ इंटेलिजेंट दे आर. तो उनको इस वजह से मुझे तो ये लगता है. अच्छा, सेकेंडली एक चीज़ जो हमारी पेरेंटिंग में एक और बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स थे ना, उनसे VCR नहीं चलता था, तो हमें कहते थे बेटा इधर आओ, ये ज़रा VCR ठीक कर दो. हमें ये नहीं करना. मतलब हमें वी हैव टू ग्रो अप विद देम. AI है ना, तो AI में अब ये नहीं हम कहते अच्छा ये बच्चों का काम है, हम लोग तो गुजार चुके हैं जिंदगियाँ, तो दे विल डू इट. यू हैव टू बी, कहते हैं ना, अपने आप को अपडेट करने के लिए. और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट डू दैट. मोस्ट ऑफ स्पेशली मैंने मदर्स में बहुत ज़्यादा देखा है
उन्हें पता ही नहीं कि इंस्टाग्राम क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं स्नैपचैट क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं कि व्हाट गोज़ ऑन अराउंड देम। तो अब ये थोड़ा सा टाइम आ गया है कि एक तो अपने बच्चों पे बिल्कुल उस तरह की स्ट्रिक्टनेस तो कर ही नहीं सकते, लाइक ही सेड कि इंफॉर्मेशन और वो इतना ज़्यादा है, सो यू जस्ट हैव टू बी देयर, यू नो, कॉन्फिडेंट एंड अ बडी. Right. And be up to date about the latest trends and everything, because this is how they are going to accept you rather you accepting them. Wonderful. Great insight. And I'm sure a lot of people watching this will be able to learn a thing or two about raising kids while maintaining, you know, such high demanding corporate careers as well. Coming back to your career, sir, यहाँ पे पाकिस्तान में एक concept prevalent है कि जो हमारी tech leadership है, they're a little disconnected from the realities of what goes on in Pakistan on the ground level. Is that true? Did you find that to be true since you've worked abroad as well? कि ठीक है. No, I a don't myth? think so, first of all. Right. I think when you talk about tech, there are two angles of the tech. One is what is coming in the technology and what is coming from globally and which is coming from the West, which they are experimenting with time, and sometimes depending on the infrastructure, it comes later in Pakistan. But I think the tech leadership is very well aware what is coming, but the challenge over here is how to train and make the people skillful over here. We don't have Right. much institutions over here. We don't have much courses over here who can make these people connected to the tech divide that is coming in, or tech overall जिस तरह एक चीज़ से आगे की तरफ आ रहा है. I think people are aware on the यानी skill leadership पे gap. कोई issue नहीं है, आपका मतलब है people leadership is pretty much in tune with the realities of the country. So you mentioned tech leadership. Huh. So I keep the definition Tech to the tech leadership, leadership absolutely, over there. yes. I think in the tech leadership, people are aware what is required Right. over there. I think one of the things that is required is a little bit of consistency of the leadership to be in Pakistan. Right. अब बहुत जल्दी क्या होता है कि जैसे कोई टेक लीडर आता है और उसको कोई अपॉर्चुनिटी मुल्क से बाहर की मिलती है, सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टेक दैट अपॉर्चुनिटी, और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से लीडरशिप चेंज होती रहती है. In case of either it's a political leadership or either it's talking about a tech leadership, I think the consistency of the policies is the key. The people may change, but the policy that is required should continue on the longer term to get the results that we are looking out today. I think अगर मैं tech leadership की बात करूँ, people are aware of the challenges. आप आज देख लें, VPN की वजह से आपकी ट्रैक नेट स्लो हो गई. आपके एंटरप्रेन्योर्स जिसका बहुत बड़ा बिजनेस आउटसाइड वर्क के साथ है, या हम पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज की बात करते हैं, तो जब आप यहाँ पे IT हब और लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीज़ें लेके आएंगे, और इफ़ दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड आउटसाइड और इट गेट्स स्लो, it will impact the business that we are talking about. I think that leadership is very much connected how the consistency of the policies and the way of the working of the government works over there. I think that connection I still feel is weak. I think we have challenges at the political level that impacts overall our growth in the tech leadership side as well. But मैं कहूँगा अच्छे लोग हैं, अच्छे leaders हैं. अच्छी बात ये है, relatively young leaders हैं, which are able to adapt to the new wave that we are talking about today. Right. So I see a lot of positives, frankly, coming out from these multinational companies or the tech leadership that you are talking about. And to be honest, Pakistan के पास, what is the asset that we have? We have the people. Talent. This talent need to be nurtured. It has to be made skillful. And that this skillful talent has to make the products that can be exported out to make this country in an independent way today as compared to where we are. So the chain is absolutely clear. हमारे पास, we are not a petrol related and we are not an oil producing country overall. We have the people, right or wrong, the people producing country, put it like this. And I think we need to make sure that मैं हमेशा कहता हूँ, इस एसेट को हम कैसे नरिश कर सकते हैं. गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए which can help the people to be more skillful today. I think that is going to help us in terms of the leadership that we are talking about. And do you think brain drain is an actual thing that we need to worry about right now at this point in our national journey? I think this term is a little bit misleading. Right. इंडिया ने ब्रेन ड्रेन करके दुनिया की टॉप कंपनीज के अंदर अपने CEOs बिठा दिए, और आज वो उस पर प्राउड करते हैं, और हम भी उनको देखते हैं कि यार हाउ दे आर रीचेबल टू. So this word brain drain is a little bit gives a negative feel out over there. Right. When you have so many people, and if the skilled people are able to go out of the country over there and able to make money and give it back to the country, or able to get more people which they can train out over across part of the world, which can be representatives of Pakistan, the important thing is how they give back to the country. I think if they are able to lost in that global world and being an individualistic, then this is a brain drain.
But if they are able to connect back to the country, they are able to provide the things to the country back, and they are able to get the people, or they are able to add more people in that journey which can help the country over there, then this is a more skillful way back of giving back to the country. It should be a little more than just bringing back the foreign exchange. It should be, you're right, it should be bringing back more opportunities for talent like them, investing in infrastructure, or somehow growing that field that they belong to, bringing some more talent into Pakistan with their exposure, just like you guys spent your time in Europe, and you brought back the learnings from your time there. I think another angle that is important for us is the people who are able to send their kids outside, they should also ask their kids to come back to this country as well. If they have the right infrastructure, they have the right set of facilities that are available within the families. हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो बाहर जाते हैं, और अगर वो एक फैमिली का मेंबर बाहर गया है और वो बाकी 10 लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है, तो अच्छी बात है. They are able to make the life of the people better in that very context. One person is outside. But if you are already settled in over here, तो I think ये जो हमारा youth बाहर जा रहा है, they need to come back, because if we want to make this country a better place over there, we need these people to come back and invest their time and what they have learned into the system over there. I think that is the only way we can connect and we can get better. This is what our neighboring country has done over the period of time as well. So I think we need to learn. We need to learn from the success stories that are around us. And China is another success story, if you ask me. The way आज भी आपको चाइना के शायद बड़े शहरों के अलावा कोई ऐसी जगहों का ना पता हो चाइना में कि वो कौन सी हैं जो देखने के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स हो सकते हैं. चाइना के लोगों के कल्चर के बारे में आप आज भी उतना नहीं जानते, सवाई उन 4-5 चीज़ों के जिनको हम कोई अच्छे अंदाज से मेंशन नहीं करते. But they are right now going as a world top country at this very point. So there is something that they are doing right. So we need to understand and learn from the people that are around us that what they are doing right, because in this dynamic world, the ground realities are going to change every year. आप अपना 5 साला या 10 साला मंसूबा नहीं बना सकते. आजकल 1 साला मंसूबा है, उसको 1 साल बाद रिविजिट करने की ज़रूरत है और उसको ट्वीक करके बेहतर बनाने की ज़रूरत है. That's the way it works. Opportunities पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी हैं, you're right, but लोग बाहर भी जा रहे हैं, सीख कर भी आ रहे हैं. I think one of the biggest strengths that we've always had is our culture, which has always been around family, right? आप लोगों ने भी बताया कि आपके करियर को एक बहुत बड़ा अच्छा बूस्ट भी मिला, और आप लोगों की पर्सनल जो लाइफ थी उसके अंदर भी फैमिली ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया. And I'm sure कि a lot of people are still going abroad and coming back because they realize कि यार फैमिली का जो हमें जिस तरह का सपोर्ट नेटवर्क यहाँ पर मिल सकता है वो बाहर उस तरह से नहीं है. So I think we need to realize and understand कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर जो है कितना important है, how important it is for us to complement each other as individuals, and understand our weaknesses and strengths and work together as units rather than individuals. So are you worried about the younger generation and how people are being perceived these days when it comes to careers and their personal lives, or they're overlapping, or do you think everything is okay and everything is fine family structure के लिए? देखिए वही मैंने जब कहा ना कि when I exited out of the corporate और मैं जब ये entrepreneurship के तरफ आई, तो मैंने ये देखा कि हमें लगता था कि सारे जो टेक लीडर्स, आपने एक वर्ड यूज़ किया था, वो सारे IBM, Microsoft, Google, मतलब यही लोग हैं, ठीक है. Those are the tech leaders जो who are running the big multinationals. लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा, there is a big ecosystem of tech entrepreneurship जहाँ पे ऐसे लीडर्स हैं who people do not know about. They are bringing in immense investment. उनके पास बहुत सारी सीडिंग आ रही है, ग्रांट्स आ रही हैं, they're doing things. आप खुद देख लें, सड़क पे जाएं, हर दफ़ा एक नया ही आपको कोई स्टार्टअप नज़र आ रहा होता है. कभी Yango है, कभी InDrive है, या क्या whatsoever. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. दिस इज़ अ गुड थिंग. मेरे ख्याल से जो इसमें थोड़ा सा जो माइंडसेट चेंज है, दैट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप. एम्प्लॉयमेंट के साथ ना आपको ये लगता है कि बाहर हमें जाके एक अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन वेरी फ्यू ऑफ द पीपल वुड से हाँ हम बाहर जाके बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे यू आर ऑलवेज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन. आप चाहे जो आपकी जितनी भी जनरेशन रह लें, आप कभी वहाँ पे एक फर्स्ट ग्रेड सिटीजन की पोजीशन नहीं हासिल कर सकते. दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक अ ब्रांड ऑफ योर सेल्फ, of your own country, and which will go out from here and make you the hero
who goes out, who can make you a Bill Gates of Pakistan. इसके अंदर मुझे ये लगता है कि yes, with more information, this thing is grasping roots कि बस जो कुछ है मेरा अपना है, you know, you do you, I do me kind of thing. तो अब इसके अंदर वाकई ये चीज़ जो है, इसको हमें दोबारा एक चीज़ है जो हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर टू सम एक्सटेंट हमें इसमें बताता है कि वी हैव अ व्हाट इज़ द one thing that we have different from West, that is our family fabric, our religious bonding with the family that we have. उसमें बहुत सारी obligations हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ हकूक़ हैं. So we need to go back to that roots. ठीक है, while we inspire for everything from we learn everything from the West, this is something we should not learn from the West. कि जहाँ पे जी एक बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसे लगता है कि बस माँ बाप टाटा, कोई बात नहीं, उससे नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. So this is not something, you know, we do over here, and this is something हमारी जो newer generation है इसको सीखना पड़ेगा और इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा that it's part and parcel of this. Secondly, इससे अगले अगर स्टेप पे आएँ, that is about the couples and the relationship. आप अभी it's a very known fact कि the divorce rate or the incompatibility rate as they call it is going up. बहुत ज़्यादा लोग उनको ये फील हो रहा है कि हाँ जी ये तो कोई बात ना हुई, ये तो मेरे जैसा नहीं है, या आई एम बेटर ऑफ अलोन. सो you need to understand that, स्पेशली मैं ख़वातीन को ये बात ज़रूर कहती हूँ कि बेटा वुमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप झांसी की रानी हो. यू जस्ट होल्ड अ सॉर्ड इन योर हैंड एंड यू नो टेक ऑफ एवरीवन्स हेड एंड कि नहीं मैंने तो सब ये करना है तो वो करना है. इट इज़ ऑलवेज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ compromise or, you know, letting go of some things to keep the things together, whether be it with your husband, whether be it with your in-laws, or maybe, you know, siblings, with anybody. Right. So ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, अब ये लड़कों का भी प्रॉब्लम है, और ये हमें जनरली अपनी नई जनरेशन को बताना है कि being empowered, being you know in control, being the आपकी सक्सेस का एक बहुत ज़रूरी फैक्टर ये भी है कि हाउ गुड यू आर इन योर फैमिली लाइफ. वी सी मैनी टॉप लीडर्स इन द वर्ल्ड, बी इट मैन और वुमेन, बहुत होते तो बहुत अच्छे हैं जी, बहुत टॉप ऑफ द लाइन, ग्लोरीफाइड, ये वो, जब घर आते हैं अपार्टमेंट खोलते हैं अंदर कोई भी नहीं होता. दे आर अलोन, दे आर आइदर डाइवोर्स्ड और नेवर मैरिड. सो आप काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप काम करते हो ताकि आप ज़िंदगी अच्छी गुजार सको, एंड ज़िंदगी अच्छी गुजारना primarily is with your family, with your older generation and the generation which is coming through, and with your partner. यानी कि आपका जो मैसेज है टू द न्यू जनरेशन वो ये है कि अपने एम्बिशंस और अपने पैशन को फॉलो ज़रूर करें, बट जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो मेजर जो स्ट्रेंथ्स हैं, दैट डिफरेंशिएट्स अस एज मुस्लिम्स, एज पाकिस्तानीज फ्रॉम यू नो द वाइडर वर्ल्ड, वो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारी जो एक जो हमारे यूनिट की जो एक सैंक्टिटी हमेशा से रही है, उसको साथ लेकर और उनकी अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको साथ लेकर आगे चलें, तो इट्स ऑल पॉसिबल, एंड यू गाइस आर लिविंग टेस्टमेंट्स ऑफ दैट. इसमें एक और बात ये, आई वुड टेक इट अ स्टेप फर्दर देन रिलीजन एंड द कल्चर. इट इज़ ह्यूमन नेचर. राइट. अल्लाह ने किसी को डॉक्टर या लीडर या क्लर्क या बेकर या कुछ बना के नहीं भेजा होता. उन्होंने माँ बाप, बेटा बहन, भाई, दादा दादी, ये एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस में है. सो प्लीज़ कीप दैट सैंक्टिटी इन लाइफ. ये एक वजह से एक सिस्टम नेचर ने हमारे लिए बनाया है जो कि एवरी कल्चर, एवरी प्लेस शुड फॉलो. वंडरफुल जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट. बट आई हैव अ कमेंट ऑन दिस वन. हमने ये सोचा है कि ये तो पहली बात तो आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों की एम्बिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू द फैमिली वैल्यू सिस्टम, बट किसी ने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है. सो देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर हियर एज वेल. Right. If you think over, since the smartphone came in 2007, it's almost, we are talking about almost 14 to 15 years down the road. जैसे ये स्मार्टफोन आया उसके साथ सोशल मीडिया आना शुरू हुआ. जब सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, we start spending our lot of time in just viewing the things and having our own opinions as well. अगर आप गौर करें तो वो वर्ड इन्फ्लुएंसर गुज़श्ता 5 से 10 साल की एक ईजाद है. Right. And these influencers started coming into our lives, which are just giving a certain impact on the social media that we are talking about, and people starting following and getting influenced
by these individual people who are there and showing a glorified version of themselves as well. Right. How many influencers are propagating about the family values? How many of them are showing over there that yes, this part of the life is equally important as compared to the part of the journey that is there? एक लाइटर क्वेश्चन आपसे करूँगा. कोई ऐसी अंडररेटेड कोई क्वालिटी है हाजरा की जो आप सबको बताना चाहेंगे? Underrated. I think she is a beautiful, wonderful person who has amazing knack of making people happy. I think, and she can connect with every genre of the. She can connect with a 10-year-old and she can connect with the 80-year-old. And that is something I think a knack that makes her different and it able to connect to the people. Sometimes मैं खुद हैरान होता हूँ how she can have so much knowledge to talk to the 10-year-old about the things that of her or his interest. Now he can talk to the 80-year-old and talking about their value systems as well. So I think that's something great about her. साकिब की कोई पेट पीव जिसके बारे में आप इनको बताना चाहें? I'm sure he knows everything about it, but still. अच्छा, as in, the बुरी चीज़? Why not? Oh. You will be Maybe surprised. something that bothers you. You will be surprised that the thing that bothers me about him is he's very organized. यूजुअली ये कहा जाता है कि जी मियाँ जो है वो बिल्कुल क्लमजी होता है, तौलिया यहाँ फेंका हुआ है और ये किया हुआ है वो किया हुआ है, और बेगम आके हर वक्त बोल रही होती है तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, टिक 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 टिक. हमारे यहाँ ऑपोजिट है. He is so much, he has an OCD, I must say. और मैं उतनी ही go with the flow हूँ कि अच्छा यार, chaos is the beauty of life. तो यहाँ पे हम बिल्कुल ऑपोजिट है और मुझे फिर इस वजह से लड़ाई भी हो जाती है. पर्दे ठीक नहीं बंद हुए मतलब like who cares about that यार, as long as it's serving the purpose, the light is not coming in, पर्दे ऐसे नहीं बंद हुए. So he has this thing for perfection while I am a totally chaotic person. क्या बात है. Again, you guys compliment each other in that way. I quote one of the examples that Shoaib Akhtar said one day. उसका कोई अखबार में आर्टिकल आया था और उसमें वो लोगों से लड़ रहा था. तो किसी ने उसको कहा यार ये किस काइंड ऑफ बिहेवियर है ऑफ द फील्ड. तो उसने कहा यार आई एम नेचुरली एन एग्रेसिव पर्सन. मैं जब ये एग्रेशन फील्ड पे दिखाता हूँ, तेज बॉल करता हूँ, तो तुम लोग वाह वाह करते हो और तुम लोग चाहते हो कि वो एग्रेशन मेरा नॉर्मल जिंदगी में आके बिल्कुल खत्म हो जाए. सो द ऑर्गेनाइज पार्ट हेल्प्स मी इन द प्रोफेशनल लाइफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट ऑर्गेनाइज पार्ट इज पार्ट ऑफ माय डेली लाइफ एज वेल, वेयर एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट एज वेल. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ both sides. You can't just leave your one trait at one side of your day and not bring it back home. Absolutely. So thank you so much for your time today. It was a very wonderful, insightful discussion. और आई होप कि हमारी जो यंगर ऑडियंस है उन्होंने कुछ सीखा होगा आप लोगों से अबाउट हाउ टू बैलेंस देयर वर्क लाइफ. मेरे ख्याल में तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अ ट्रू thing. Does it really exist, work life balance, or do you have to find that balance yourself? How do you guys feel about that? So there are different ways to balance. I think we decide where we have to balance our lives in the day, because one of the schedules, I travel a lot and everything, but we have our common points how to make our the work life balance that we are talking about. And it's not necessarily anymore कि कोई 8 to 10 की jobs होती हैं. अब things have moved on with all this media that we are talking about. You need to be available all that time as well. I think where you can make your life your work and where you can make your work as your life, I think both these things go, and you need to have a very sensible partner, and that is, I think, one of the things that helped me, because she was worked in the corporate, so she able to understand what are the dynamics and what are the requirements of the corporate life over there. Right. So a lot of credit to her of maintaining that work-life balance than me. I give a lot of credit over there to her, but this is what happens in every of the couples. Work-life balance is something that you have to work around or work with every day. Just like happiness. Happiness is not like an ultimate, destination. It's the whole journey, right? Similar success. You guys have been very successful, and I wish you all the success in your future endeavors as well. And I hope that we can do this again sometime very, very soon. Thank you so much for coming over. Thank you so much. Thank you very much.